Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen. Well, this place has witnessed some unbelievable finishes in European competition over the years. हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड। हमारी जो एनुअल एपिसोड होती है हम हर सीज़न से पहले करते हैं, फिर हम पूरे सीज़न में आप लोगों को नज़र नहीं आते। तो अपनी ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए हम सीज़न से पहले फिर दोबारा आ गए हैं। और अगेन आई हैव शाहजहां एंड शाहरुख विद मी, सो वेलकम टू द शो गाइस। Hello, how's everyone doing? Good to be here. आई थिंक बीच में मैं और शाहरुख जो है हम ब्रेक पे थे फुटबॉल से। दिसंबर के बाद हम लोग जो हैं वो कुछ ऐसी स्टेट में थे कि हम लोग फुटबॉल में बात नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए काफ़ी अर्से से आपने वर्ल्ड कप के बाद शो नहीं देखे। शाहजहां ऑन द अदर साइड बहुत ज़ोर से बात सिर्फ करना चाहते थे। सिर्फ एक महीने के लिए एक्टिव थे। वो दिसंबर का ही महीना एक था। दिसंबर में थे, लेकिन उसके बाद मुझे याद है हमने एक शो किया था जिसमें शाहजहां ने फिर फुटबॉल और वर्ल्ड कप की बात की थी। Thanks for reminding me. मैं तो भूल ही गया था कि वर्ल्ड कप भी हुआ था पिछले साल. नहीं वो भूलना ही बेहतर है। बट मोर इम्पोर्टेंटली आज अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है, सो इट्स टू अर्ली टू से कि कौन जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं, जिस तरह बायर्न म्यूनिख जीत जाएगी, सो उसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। बट बाकी ईपीएल में क्या होगा, ला लीगा में क्या होगा, इस पे हम आगे बात करेंगे होपफुली बिफोर द ईयर एंड। बट राइट नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट समर, जो अभी तक ट्रांसफर्स का सीज़न शुरू हुआ है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली किस तरह एकदम जो एक नया गेम प्लेयर एंटर हुआ है विच इज़ सऊदी अरेबिया। उन्होंने जो एकदम जो है आपके 20-25 लोग उधर गए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा अगर 29 साल फेबिनो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज़ गोइंग टू सऊदी अरेबिया at 29, so that's a big shift from someone like Ronaldo who's 37 going there. और तो इसी तरह इसका क्या हो, इस पे बात करेंगे। एंड देन अगेन मेसी हैज़ मूव टू अमेरिका, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उस पे भी शाहजहां अपना कमेंट दे सकते हैं। बट लेट्स स्टार्ट कि अभी तक जो है वो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सऊदी अरब एंटर हुआ, इन्होंने न्यू कासल लिया, दैट वाज मोर लेस अ नॉर्मल थिंग क्योंकि कतर पहले कर चुका था। बट नाउ दे हैव स्टार्टेड poaching people, if you know, for the lack of better word. So how do you see where is it going? Let's start with Shahjahan. देखिए मेरे लिए तो ये स्पेशली हार्मिंग था because there were also a lot of conspiracy theories going around, obviously unfounded, कि because वो जैसे आपने कहा मात के न्यूकासल की जो करेक्शन है कि ये एक टॉप 4 कंटेंडर को निकालने के लिए ना हमारे डीएम्स ये पोंच कर रहे हैं। वैसे तो मैं फर्मिनियो और हेंडरसन को unlike a lot of Liverpool fans, I still respected them for what they've done. लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया था डिफेंड करना, एंड आउट ऑफ जब हम फ्रस्ट्रेशन काफी गालियां भी मैंने फर्मिनियो और हेंडरसन को दी है। लेकिन नाउ दैट सऊदी अरेबिया वो चले गए हैं, तो आई कांट help but feel a little sad and also a lot of resentment against the way this has happened, because आपने mention किया Fabinho भी 29 का है. Yes, he had a horrible year, but someone who still had a couple of good years, you would think, to give in the big leagues. So it was very surprising. And again, comparing to the other transfers to Saudi Arabia में हुए, 40 million doesn't really, Hmm. sound a very big number. अगर बाकी आपके लोग जो 33-34 के हैं वो भी 30-40 मिलियन के जा रहे हैं, तो यू वुड हैव assumed कि फर्मिनियो भी थोड़ा सा ज्यादा चले जाता था। बट ये तो खैर मैं बड़ा पर्सनल अपने लिवरपूल लेंस से देख रहा हूँ। बट ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज पहले तो आई फेल्ट कि दे डूइंग दिस विद अ टारगेट के 2030 के अंदर बिड करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज मैंने काफी देर से इतना फॉलो नहीं किया, बट आई थिंक दैट आइडिया वाज शेल्ड कि शायद 2030 के लिए दे नॉट बिडिंग फॉर द वर्ल्ड कप एज ऑफ नाउ। so then it really makes me question कि क्या इतनी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या ये सस्टेनेबल रहेगी। जैसे हमने चाइना में भी देखा था इशू जो था। so that's something जो the next couple of years ही हमें पता चलेगा कि what the end game is, what the end goal is. uh, but let's see right now, at least from a Liverpool perspective, तो काफी dent हुआ है, and even from other players जो potentially maybe बाकी top 6 नहीं तो बाकी Premier League clubs जिनको buy कर रही थी, they have another avenue. From a player's perspective, it's great, you know.
They can get better salaries, they can get a better package. तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा है, स्पेशली प्लेयर्स जो हैजार्ड टाइप या फबिनियो जैसे लास्ट ईयर था उस टाइप के प्लेयर्स के लिए तो परफेक्ट है, कांटे फॉर एग्जांपल. बट इट रिमेन्स टू सी कि क्या लोग अपने सॉर्ट ऑफ पीक में जाएंगे या नहीं. आई डोंट think like Mbappe would ever, jump ship, or Bellingham or someone like that. But perhaps someone जो 25-26 साल का है and उसको अगर मौका नहीं मिल रहा टॉप 4 चैंपियंस लीग में खेलने के लिए, then that's a viable option for them. But yeah, I mean, we've seen this experiment go wrong in China and Russia as well. So right now because it's so sudden, we don't know what the future holds. तो एक दो ट्रांसफर विंडोज और के बाद ही हमें थोड़ा सा समझ आएगी कि क्या सीन है. इसमें एक और भी है बिफोर मी टू शाहरुख, एक दो चीज़ें चाइना का आपने जिक्र किया, आई वाज ऑलरेडी थिंकिंग हम उसको भी ऑब्वियसली टच करेंगे आगे. बट चाइना में परहैप्स वो थोड़ा अपना सॉफ्ट पावर का जो इमेज था उसके पर्सपेक्टिव से वो चल रहे थे. वहाँ पे वो पर्सनल उसकी लाइकिंग और वो जो एक वहाँ पे वन मैन जो उसका था उसके शायद इंटरेस्ट और हैं जो चाइनीज प्रीमियर है ऑब्वियसली. यहाँ पे एमबीएस तो फिर हार्ड कोर इस पे आप आ रहे हैं ना. आप ये देखिए उन्हें 4 क्लब्स जो हैं वो अब उनका एक ही ओनर है, एंड दैट द सेम पार्टी ओन्स न्यू कासल एज वेल. सो ये तो एक बड़ा एक उनका सेंट्रलाइज किस्म का बन रहा है, और उसमें अगेन सॉफ्ट पावर का भी कॉन्सेप्ट है, और 2030 के वर्ल्ड कप का भी आई डेफिनेटली थिंक एलिमेंट आ रहा है. आज मैं देखे तो 2034 का ऑस्ट्रेलिया सोच रहा है कि वो बिड करे. सो ये मुल्क देख रहे हैं इस तरफ आने के. मुझे लग रहा है अभी ये वैसे चाइना से ज़्यादा अरसा सस्टेन करेगा. रशिया का तो बहुत ही आई थिंक शॉर्ट किस्म का एक्सपेरिमेंट था. हम्म. आई थिंक हो सकता है. Before I have a devil's advocate wala question, I'll like to take on from Shahrukh. I think Shahjahan covered most of the points, and I think it's more to do with the soft power aspect. मुझे अब ये नहीं पता. I don't think China was going towards that angle. I think they actually wanted to set up like a parallel league, not a parallel league, but like a league which could compete with the top 4 or 5 leagues. Saudis, I think, have a dual purpose here. They are ambitious, right? And they're also looking at it from a soft power perspective. क्योंकि अगर आप देखें, this all fits into the strategy, the overall strategy of opening up their economy, liberalizing their laws, making Saudi Arabia more popular and a more attractive place for visitors, right? So this also fits in very nicely with that strategy. अब चाइना के टाइम पे बहुत जल्दी फिजल आउट कर गया था सारा प्लान, एंड द बेस्ट प्लेयर दैट दे probably acquired during that time was Oscar, right? That Chelsea Hulk, Chelsea Hulk, playmaker. Oscar, यही I दो think की मेन प्लेयर थे. शायद विलियन भी एक आध साल के लिए गया था. वो क्या नाम है आपका बेल्जियन प्लेयर एथलेटिको वाला जो है, हम्म. he went for a couple of years and came back. But Saudi Arabia, so the Saudi League made a big coup by procuring Ronaldo, first of all, right? ठीक है, he's 37, 38, past his prime. No one else really wanted him among the big clubs in the biggest leagues. But to get a seven-time Ballon d'Or winner, one of the greatest players of all time, to come and play for you was a big headline statement. Then to get the current Ballon d'Or holder as well, And Benzema, the to finalist leave, from last year. and the finalist from last year. Yeah. तो वो एक और मतलब धचका, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा धचका था, because we were not planning for a season without Benzema, right? We thought कि अच्छा चलो एक और साल निकाल लेगा, next year we'll go for Mbappe, smooth transition, everything's perfect. But I think he made the right choice considering his own circumstances, because he achieved his peak last year, Yeah. and उसके अभी जो season गुजरा है, he didn't perform badly, but you could tell that it's done now, right? And he would have probably struggled through this year. So from a personal perspective, उसके लिए it was a great decision. Obviously, it hurts us a lot. So उसके हाँ फिर Kante going there, Fabinho, so many of the players, and Shahjahan's absolutely right. I think a lot of these players जो 27-28 साल के होंगे, who are playing in mid-table clubs, who don't have much prospects of making it internationally or joining a big four club or winning trophies, they'll be like, यार हमारा करियर बहुत छोटा होता है, 8-10 साल का या आप करियर होता है, हेनरी let's केन go की and बात make कर some रहे हैं, money. हैरी केन की बात कर रहे हैं. So let's just go and make some money and make sure that जो हमारे आखिरी 30-40 साल होंगे जिंदगी के, वो हम आराम से याशी के गुजारें. And I don't see the Saudi league going anywhere. To be honest, I don't think it'll fizzle आई out. भी. I think they have the bank, they have the cash power to bankroll this for a very very long time.
and I think this thing will start to pick up because of इसमें these two एक और factors. चीज़ जो एलिमेंट वो भी आप आ रहा है कि ये देखें कि साउथ एशियन मिडल ईस्टर्न हम सब के लिए एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई है कि ये Exactly. एक Yeah. एंटायर डिफरेंट मार्केट थी फॉर पर्सन लाइक मी। चलो वहां पर जाके ईपीएल का मैच देखना वुड बी लाइक कभी लंदन गए तो एक मैच देख लिया हमने या वो स्पेन का चक्कर लगा या आप सेटल हो जाए समथिंग लाइक दैट। बट सऊदी अरब लेके उम्रे पे जा रहे हैं ऑनेस्टली बीइंग वेरी ब्लंट तो मैच देख के वापस आ सकते हैं। Yeah. एंड लॉट ऑफ पीपल हमारे में तो इतनी कैपेसिटी हम तो मैच देखने भी सिर्फ जाके वापस आ सकते हैं Yeah. Yeah. जस्ट पुटिंग इट आउट। Yeah. सो आप साउथ एशियन और बाकी सारी मिडिल ईस्ट इनके लिए एक्सेसिबिलिटी भी तो बढ़ रही है हमारी। और यहाँ पे फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स रॉन्ग इन इट। अगर हमारी एक और स्ट्रॉन्ग पैरेलल लीग खड़ी हो रही है जहाँ पे आपको डाउन द लेन चलें अभी 37-35 के लोग मिल रहे हैं मे बी डाउन द लेन आपको यहाँ से दुनिया का सबसे एक्साइटिंग टैलेंट नजर आए तो इसमें हर्ज क्या। जब बाकी सारे भी पैसा इस्तेमाल करके सिटी ने अपना एम्पायर खड़ा किया है That's true. पीएसजी Yeah. ने भी अपना इतनी बड़ी टीम खड़ी की है और ऑब्वियसली ईपीएल ऑलवेज हैड द मनी नॉट बिकॉज ऑफ सम ऑयल जाइंट पीछे लेकिन उनकी अपनी कमर्शियल डील्स थी। तो व्हाई नॉट अनदर सऊदी लीग which hopefully can be more competitive than German league? Yeah, I don't Comments. think I don't think there's any harm in it per se. वैसे अगर आप overall scheme of things में देखें तो हाँ जितना पैसा आ गया फुटबॉल में especially because of these state-owned clubs and these petrodollar clubs, I mean it's not great. It's not great for the competitive nature of the game. But since we're already going that way, अगर एक नई लीग आती है और जो compete कर सकती है इन clubs के साथ और इन leagues के साथ, then yeah, sure, the more the merrier, I would say. Why not? I think still honestly a better idea than Super League to have a That's just competitive been league. a disaster. But Perez appears to be intent on launching it and seems very confident कि हाँ ये 2-3 साल की बात है चैंपियंस लीग को रिप्लेस कर लेंगे. I wouldn't rule it out with him honestly. He आई can do डोंट रूल इट आउट। it. उसकी वजह ये है कि अगर आप क्रिकेट का थोड़ा सा एग्जांपल है 96 में क्रिकेट के जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो 96 के वर्ल्ड कप से टर्निंग पॉइंट आता है। उससे पहले इसका पूरा इनका ज़्यादा कंट्रोल जो था वो हमारे जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन क्लब्स का था रूल्स वो बना रहे थे। 96 में सब कॉन्टिनेंट में आता है वर्ल्ड कप एंड वो जगमुन डालमिया इनका होता था प्रेसिडेंट बीसीसीआई का। Hmm. दैट गाय बेसिकली जो है शिफ्टेड द एंटायर टिल टुवर्ड्स द इंडियन और साउथ एशियन क्रिकेट। वो पहले साउथ एशियन क्रिकेट पे लेके आया उसने बांग्लादेश को दिलवाया फिर बाद में हमारे 4 वोट यहाँ पर हो गए फिर वो शिफ्ट लेके चला गया इंडियन साइड पे। अब किसी का भी वहां पे बजट जो साल का जो आपको रेवेन्यू में शेयर है वो 10% भी नहीं है सब सिंगल डिजिट में है और इंडियंस का 38% है। और ये सारी चीजें हम 96 से देखते आ रहे थे एवरी वन वॉज राइटिंग अबाउट इट टॉकिंग अबाउट इट लेकिन वो होके रहा। Hmm. सो इसको अगर आप इस एग्जाम्पल फुटबॉल में रखें तो वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट Yeah. जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं कि स्पोर्ट्स में पैसा होना चाहिए या नहीं होना Right. चाहिए। And if you go तो further अब back, Packer League जो थी 70s कैरी की, बैक के लिए white ball यस cricket, colored clothing, floodlights, all that. So yeah, it's part of the इवन process. आप T20 का भी देखें ना स्टार्ट्स विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। T20 जो है वो आईसीएल बना था जो बाद में फिर इंडियन बोर्ड ने स्क्रैप हाँ, करके जो जी yes. टीवी वालों ने शुरू किया था। हाँ, और फिर हाँ, उसमें ही पाकिस्तान की टीम थी लाहौर बादशाह इंजमाम वगैरह हाँ, उसमें खेल रहे थे। हाँ, जमाम हाँ, हाँ. वगैरह। उसको जब उन्होंने पोटेंशियल देखा तो उन्होंने उसको स्क्रैप करके आईपीएल लॉन्च किया नाउ इट्स द बिगेस्ट ब्रांड यानी इट्स रियली कम्पीटिंग विद ईपीएल। तो उससे और ये एनबीए के साथ कम्पीट कर रहे हो कमर्शियल डील्स में। तो आई थिंक उस पॉइंट से तो हम आगे आ चुके हैं जो हम ग्रुप में भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि उस्मान जितना मर्जी गुस्सा निकाल लें लेकिन अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ का इवन इफ यू लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। Yeah, so the question is, I mean, is Saudi going to be the only league to be able to accomplish this, or is MLS going to be competing with it? Any other, country can सिर्फ Saudis और Qataris ही हैं अब इस गेम में. कतरीज तो शाहजहां इस पे कमेंट लेते हैं लेकिन कतरीज का आई थिंक उनका ज़्यादा वो शौक था उनको शौक पूरा खत्म किया हो है। गया। हम्म। हाँ वो खत्म हो गया उन्होंने जितने बड़े वहाँ डैम्स बनाए हैं अब उनका वो क्या करेंगे मतलब जनरली सेइंग अभी तो इतने एक बड़ा। डैम पेरिस में फटने लगे उनका. सॉरी अभी तो एक पेरिस में डैम एक फटने लगे उनका. अच्छा ये पीएसजी स्टोरी में. तक ओ पीएसजी में. हम्म। तो अब वहाँ पे डैम्स बना लिए उन्होंने वो डैम्स जो हैं वो खाली पड़े हैं वहाँ पे कितना का फुटबॉल कल्चर है कि इतने टॉप 10 क्लब खेले हैं आपके तो उनका तो खैर बिल्कुल नहीं था। सऊदी स्टिल आई थिंक हैव अ बेटर चांस एज ऑफ राइट नाउ। आई थिंक सऊदी लीग इज वे बेटर देन एमएलएस एंड ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट क्योंकि उसकी जेन्युइन लोगों में फॉलोइंग है स्पोर्ट्स की। हाँ. तो नहीं खैर एक्चुअली स्पोर्ट्स की फॉलोइंग तो अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है. इट्स फुटबॉल जस्ट दैट फुटबॉल प्रॉबेबली फुटबॉल, फुटबॉल हाँ, की
या सॉकर की नहीं है. soccer. सॉकर की नहीं। या So yeah, but yeah, Middle East में football has been very very popular for a number of शाहजहां, years. आपके दोस्त अभी वहां पे गए हैं, तो आप जरा हमें अमेरिका की क्या रिपोर्ट्स भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसी आपको? देखें, तीन क्या 2 मैचेस में 3 गोल्स, ये लेवल होता है। बट अगर कंपेयर हम एमएलएस एंड सऊदी लीग को, अभी वैसे तो ऑब्वियसली राइट नाउ एज थिंग्स स्टैंड टू एमएलएस इज वे वे मोर मैच्योर एज अ लीग, तो वो तो है। द ओनली क्वेश्चन इज कि मे बी इन द नेक्स्ट व्हाट 3-4 years में ही इक्लिप्स हो जाएगी, just because of the star power and just because of the money that's involved. Maybe another year, जिस स्पीड से ये इवॉल्व होंगे एंड डेवलप करेंगे अपना एमएलएस, थोड़ा सा उस तरीके से ऑर्गेनिक ग्रोथ थी। एंड वो अगेन मैंने फॉलो ऑब्वियसली नहीं की, शायद अब करना शुरू कर दूं। बट बेकम के आने से वो एक ग्रोथ स्पर्ट हुआ था, बट वो भी इतना ज्यादा लेट्स से कि एस्केलेट नहीं कर सके, उससे इतना ज्यादा वो एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सके, थोड़ा सा बस वो इम्प्रूवमेंट आई थी। And then Zlatan, and then a lot of other players जो बीच में गए हैं, Gerrard and Henrys and Lampards and Pirlo भी किया था, I believe, I could be हाँ, wrong, पहले गया या था, Vieira हिगवाइन हो गया गया। था। So a I lot of good players ended up going there. Obviously the difference is कि वो गए थे जब वो 33-34 के बाद, not when they were 28, 29, 30. A. B. I think like you mentioned कि जितना interest मिडिल ईस्ट एंड इस मार्केट के अंदर, एशिया मार्केट में जनरली, एशियन ये मार्केट, फार यस। ईस्ट हो जाए, ईस्ट साउथ एशिया हो जाए, मिडिल ईस्ट हो जाए, तो वो नहीं है अमेरिका के अंदर, बिकॉज वो वैसे भी दे हैव सो मेनी अदर टीम स्पोर्ट्स, वो वैसे ही डाइल्यूट हो जाता है जो फैन बेस है। तो इधर इट्स डिफरेंट। इधर आपकी क्या, अगेन आई अपोलोजाइज फॉर माय इग्नोरेंस, बट आई कांट रियली थिंक ऑफ एनी टीम स्पोर्ट जो फॉलो हो रही हो मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया में, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट इन साउथ एशिया, बट मिडिल ईस्ट में आई कांट रियली थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। तो वो उस तरीके से फुटबॉल क्रेजी हैं वो लोग, अफ्रीका में भी इतने ज्यादा हैं। तो I think उसकी development and उसकी sustainability perhaps ज़्यादा होएगी, but like I said, let's see and wait in a couple of years कि कहाँ तक लेके जाते हैं, because जितनी उनके पास resources हैं और जितनी MBS की vision है, तो I don't think I wouldn't bet against them. जहाँ तक MLS की वैसे बात है, मेसी की, तो again perhaps I'm going on a tangent, but for Messi it made sense. जितना भी पैसे सऊदी अरेबिया फेंक रहे थे, आई थिंक ही मेड अ डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट he wanted to do, maybe his what his family wanted to do, because I know uh, it won't be easy in Saudi Arabia. बीच में रूमर्स भी आए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पार्टनर के हवाले से भी, अनफाउंडेड और नॉट, बट आई कैन इमेजिन, इवन अगर मैं अपनी बात करूं, तो कभी कभी बंदा कहता है ना सऊदी अरेबिया जाओ, तो मैं भी कहता हूँ यार, I mean, the only reason I would ever want to go there is because of the money. Otherwise, मतलब पाकिस्तानी ठीक है। So perhaps I'm very wrong. So Messi and उनके culture के लिए तो it makes sense. It's a very easy transition to Miami or anywhere in the US South Coast या East Coast में बंदा चले जाए, मिडिल में ना रहे। तो जितनी उसने करना था उसने कर लिया है, खेल लिया है। अब ठीक है, वो हनीमून पीरियड में जाएगा, 1-2 साल खेलेगा, पैसे बनाएगा, पार्ट ओनर बन जाएगा, and then he'll just retire. So for him, I think from his perspective, his family's perspective, it makes sense. But I agree with you कि सऊदी अरेबिया के अंदर जितना है, काफी आजकल रोनाल्डो मेसी का जो आई थिंक द डिबेट इज हैज बीन पुट टू बेड आफ्टर द वर्ल्ड कप, बट फिर भी वो अब फिर से हो गया ना कि सऊदी लीग बेहतर है, एमएलएस ऑल स्टार गेम्स कराएं तो कौन जीतेगा, तो ऑब्वियसली सऊदी लीग जीतेगी या जीतना चाहिए, बिकॉज ऑफ द स्टार पावर दे पोस्ट। But MLS will always have a part, because I think जिस तरीके से organically grow की है, आहिस्ता 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 कर रही है, so I don't think it will make a huge splash in the global football ecosystem, but they will have like a specific market share अपने US नॉर्थ अमेरिका की, जिसमें वो अपना आराम से अपना उन्हें करती है, प्लस स्पेशली 2026 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो who knows, maybe next year और भी स्टार पावर हमें नजर वहां से भी आए फॉर द इंटरिम पीरियड। यूएस की वैसे भी जो भी नेशनल टीम थी, उनकी परफॉर्मेंस भी विद टाइम बेहतर होती जा रही है, और अब सिंस दे विल बी होस्ट, तो कंफर्म एटलीस्ट दे आर प्लेइंग दैट वर्ल्ड कप फॉर श्योर। तो वो चीज़ भी दैट विल हम्म। आल्सो हेल्प। एक चीज़ मुझे अभी आई, आई yeah. एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, सो सॉरी इफ यू वांट टू गिव एनी कमेंट, तो प्लीज हम टॉपिक हाँ, चेंज मेरा नहीं बस ये करें। था कि I don't think MLS will be able to compete with the Saudi league,
purely because of the money factor. And just like Shahjahan said it, put it very succinctly, I think it all boils down to whether you want money or whether it's a cultural aspect for players, right? So in the case of Messi, other South American players, maybe the adjustment to the US would be much easier. बजाय ये कि Yeah. एक completely different environment में जाए. हाँ, I mean, it boils down to very basic, requirements Preference. ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कि आपकी फैमिली के लिए बेस्ट चीज़ क्या है. आपको पैसे चाहिए, आप सऊदी जाएं. अगर आपके लिए कल्चरल वो मिसफिट बहुत ज़्यादा है, द यूएस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दैट. Easy life, easy money, easy football. But me personally, I think a lot of other fans around the world would have loved to see a second part of the Messi Ronaldo rivalry in Saudi, right? That would have been amazing. Al Hilal और जो भी है, कोई दूसरे क्लब जो होता है जिसमें मेसी खेल रहा होता, सो वो एक बारसा मड्रिड टाइप अगर कित, वो शुरू हो जाता दोबारा से, दैट वुड प्रॉब्ली कितनी एडेड द डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी अपील. यार. वहां पर भी रेफरी खरीदने थे. बट या नहीं, इसमें एनीवे. हाँ वो भी, और इसमें या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अमेरिका शिफ्ट हो जाएं और आप सऊदी ब्रांड एम्बेसडर भी रहें, तो फिर आप दोनों हाथों से जो है पैसे कमाएं. हाँ. यानी दो यस. ट्रिप ट्रेनिंग छोड़ के वहां चक्कर लगाएं, वीकेंड पे सऊदी भी खुश, पैसे मिल गए और रहें अमेरिका में. दैट इज ऑल्सो स्मार्ट मूव. सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन अमेरिकन फुटबॉल, बट एक जो मेरा एक जर्नल एनबीए को और सबको देखते रहे, तो उनकी जो थोड़ी, जहाँ तक मुझे लगता है, अगेन माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है उनका सिस्टम. एक ईस्टर्न लीग होती है, फिर कोई वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस लीग होती है, फिर एक उससे मैच खेलता है, फिर उससे खेलता है, फिर एक टीम ने पता नहीं वो 4 दफा जीता है वो को भी. सो जस्ट थिंक, एमएलएस में जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी इसी किस्म का सिस्टम है. So rather than having like 20 cities from America and creating a standard league, वो अभी भी उसमें खेल रहे हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न और सेंट्रल समथिंग लाइक दैट. मे बी अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड पे आ जाएं, इट माइट हेल्प, आई डोंट नो. और फिर सॉरी, इनके वो भी होते हैं कि अच्छा आपने वहां पे इस सिटी का लेना है तो यहाँ पे आपका स्टेडियम होगा, जो कि इनिशियली बैकम के हम्म. प्रॉब्लम्स आए थे. इट टुक हिम अ व्हाइल टू स्टार्ट अ क्लब देयर. एनी कमेंट्स इफ यू नो एनीथिंग, बिकॉज मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ चीज़ों पे, जस्ट अ फीलिंग. I'm blank. I'm Yeah, not sure. शाहजहां तो छोड़ I'm के आ neither, गए. and I think I Let's think to edit your this part point. out, I think. And the fact कि इतना मुझे complicated है, पता तो भी नहीं था इस बात people का. outside, हाँ, नॉर्थ अमेरिका के अलावा आई थिंक कोई फॉलो कर भी नहीं सकता. बिकॉज मैं आई रिमेम्बर बास्केटबॉल भी जब देखता था, तो यूज्ड Yeah, टू बी वेरी लाइक कंफ्यूजिंग कि अच्छा आपने 4 मैचेस सेल्टिक्स ने उसके साथ खेले हैं, लेकिन 3 मैचेस डैलस के साथ खेले हैं, बिकॉज कोई वो होता था. yeah. आई डोंट इवन नो हाउ दे कम अप विद इट, बिकॉज अगेन लाइक आई एम आल्सो नॉट वेरी वेल वर्स्ड ऑन द अमेरिकन ये सिस्टम. लेकिन MLS इज द सेम. एंड यू जस्ट इमेजिन क्या अमेरिकी इतने पता नहीं क्यों ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इतनी सिंपल चीज को. आप बेशक रेलिगेशन ना रखो, ठीक है, दैट्स फाइन, बिकॉज अगर में इतना पिरामिड सिस्टम नहीं है, बट आप एटलीस्ट वो एक टेबल तो रख सकते हो यार. इट्स जस्ट Yeah. इजी टू जस्ट ट्रैक यार इसने 30 मैचेस खेले इसलिए इतने जीते, रादर देन कि आप हर कॉन्फ्रेंस की टॉप 6 प्लेऑफ्स में जाते हैं और प्लेऑफ्स से खेलते हैं. देन दे हैव लाइक 5 6 डिफरेंट 4 आई थिंक डिफरेंट कप कॉम्पिटिशंस, जो मुझे अगेन वो भी नहीं समझ आती. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जो लाइक यू गाइस, जिसमें हमारे अपने डोमेस्टिक लीग्स जो हम फॉलो करते हैं, ला लीगा हुआ या सीरिया हुआ, या दे आर 3 4 डिफरेंट कप्स, बट दे स्टिल इजी टू अंडरस्टैंड. इनका तो मुझे भी नहीं समझ आती कि यार वो डायरेक्ट सेमीफाइनल्स में पहुंच गए इंटर मायामी विदाउट आई थिंक यू हम्म. प्लेइंग अ सिंगल गेम, एंड नहीं, देन वो वो जीत जीत गए गए तो हैं. यहाँ से वो फाइनल में पहुंच गए. वो सो इट्स लाइक फाइनल भी रियल जीत गए, वेird. मैं आपको भी बता रहा हूँ. वो फाइनल भी जीत गए हैं.